तो आवाज आ रही है? हेलो यस सर। राम। ओके, तो ये देख सकते हैं रिसीवर विंडो जो होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो the scheme that can be used to acknowledge multiple frame. ठीक है, सो इसीलिए हमारा एन एन फ्रेम के लिए वेट करे, नेक्स्ट nth फ्रेम के लिए वेट करेगा। क्लियर, because it is used to acknowledge multiple frame. Clear, so it could receive frame 2 3 4 but withhold acknowledgement until frame 4 has arrived. Clear, so by returning an acknowledgement with sequence number 5 it acknowledges frame 2 3 4 at one time. Clear, so जो भी आपकी ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्रेम है इनका एक्नॉलेजमेंट फिफ्थ वाले से हो चला जाएगा। अगर फिफ्थ वाला इसने एक्नॉलेज भेज दिया विद सीक्वेंस नंबर 5 तो इसका मतलब है कि जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हैं वो आपके रिसीव हो गए हैं। क्लियर, सो द रिसीवर नीड्स ए बफर ऑफ साइज 1। ये देख सकते हैं आप लोग, दिस इज द डायग्राम फॉर दैट। so yeah, this is the window before frame before receiving frame 4. This is the frame 4 and this is the window before सो जब ये फ्रेम 4 आपका रिसीव हो गया तो जब इसने एक्नॉलेजमेंट कर दिया फिफ्थ वाले से, इसका मतलब ये आपका रिसीव हो गया। ये इसका मतलब ये 2 3 4 भी आपके रिसीव हो गए। क्लियर, on the other hand if the local application can process data at the rate it's being transferred, so sliding window still gives us an advantage. Yeah, so this is another advantage of this window protocol. If the window size is larger than the packet size, then the multiple packets can be outstanding in the network. Since the sender knows the buffer space is available on the receivers to hold all of them, so ideally a steady state condition can be reached to hold all of them. Clear? So इसके बाद आपका है वन बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, that is stop and wait ARQ. Clear? ARQ is what? What is ARQ? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। Okay. Could you please explain what is this? Could you please explain? Do you know about this stop and wait ARQ? सर ये जो पाथ में हमारा सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में मतलब जो ट्रांसमिशन होता है लाइक स्टॉप एंड वेट ARQ हो गया और उसके साथ में हमारा गो बैक 4 और सेलेक्टिव रिपीट ट्रांसमिशन में सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए काम में आता है ये। Okay. प्रॉपर Can एक्नॉलेजमेंट anyone? मिल रहा है या नहीं, ये सब भी चेक Okay. करता है। इसको हम लोग वन बिट प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं because the maximum window size here is n, that is equal to 1. Okay. ये बेसिकली स्टॉप एंड वेट टेक्निक को यूज करता है, इसीलिए स्टॉप एंड वेट इज अटैच्ड विद दिस। क्लियर, so the sender sends one frame and waits to get acknowledgement from the receiver. एक एक फ्रेम भेजेगा सेंडर, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलने तक वेट करेगा रिसीवर। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द acknowledgement sender sends the next frame. So one bit sliding window protocol is also called stop and wait protocol. Clear? So अभी हमें डायग्राम भी देखेंगे इसका नीचे। So ARQ, as you know, automatic repeat request, which is simplest among all protocols. So basically, the sender, that is station A, transmits a frame and then waits till it receives positive acknowledgement or negative acknowledgement. कोई भी आ सकता है, ठीक है, from the receiver side, that is station B. स्टेशन ए आपका सेंडर हो गया, स्टेशन बी रिसीवर हो गया। स्टेशन बी sends an acknowledgement if the frame is received correctly. Yeah? Otherwise, it sends the negative acknowledgement, that is NAK. Station it sends a new frame after receiving acknowledgement. Otherwise, it retransmits the old frame.
ये अगर उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा तो वो नया फ्रेम सेंड करेगा सेंडर, अगर उसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा तो वो रिट्रांसमिट कर देगा ओल्ड फ्रेम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम। So this is the station A with frame F0. Clear? So it has just sent the data to station B. Clear? This is the propagation delay. जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक प्रोपागेट करने में लगा स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक, तो ये आपका बीच का ड्यूरेशन प्रोपागेशन डिले हो गया। ठीक है, दिस इज टी प्रोपागेशन इज द प्रोपागेशन टाइम। ठीक है, फॉर दिस फ्रेम एफ नॉट। फिर ये देखिए दिस इज आल्सो द प्रोपागेशन डिले एंड इट जस्ट टेक टू send the acknowledgement। स्टेशन बी ने यहाँ एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, दैट इज ए नॉट। ए नॉट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ फ्रेम एफ नॉट। क्लियर? सो ए नॉट यहाँ पे रिसीव हुआ जिस टाइम के बाद फिर इसने F1 फ्रेम भेजा। नेक्स्ट फ्रेम इज द F1 फ्रेम। F1 फ्रेम आपका फिर यहाँ पे गया। ठीक है, इट इज रिसीव्ड। सो स्टॉप एंड वेट ARQ फॉर डैमेज फ्रेम। अगर मान लीजिए कोई फ्रेम डैमेज हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए लॉस्ट और डैमेज फ्रेम द सेंडर इज इक्विप्ड विथ ए टाइमर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फ्रेम हमारा सेंडिंग टाइम में लॉस हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए सेंडर क्या करता है, एक टाइमर भी सेंड करता है, इक्विप करता है, जो भी सेंड करेगा फ्रेम के साथ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाता है तो सेंडर रीट्रांसमिट करता है ओल्ड फ्रेम को। ठीक है, सो द सेंडर द सेकंड डेटा दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, डायग्राम में देखा, यहाँ आप देख सकते हैं जबकि जो सेकंड डेटा था वो आपका लॉस्ट हो गया है। एक मिनट यहाँ पे दिखाते हैं, ये 3.13 में, जस्ट वेट। ओके, ये यहाँ पे देखिए जो सेकंड डेटा है वो आपका लॉस हो गया है। ये तो ओके, so the sender that is unaware of this loss but starts a timer after sending the data, sending is data। ठीक है, सो चूंकि सेंडर को नहीं पता है कि डेटा उसका लॉस हो गया है तो वो अपना टाइमर स्टार्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर सेंडिंग इज डेटा, जब भी डेटा सेंड करेगा तो एक टाइमर स्टार्ट करता है। सो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाना चाहिए टाइमर एक्सपायर होने से पहले। ठीक है, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है, टाइमर काउंट आपका 0 हो गया and triggers retransmission of the data again by the sender। So the sender always starts a timer that following the transmission, but in the second transmission receives an acknowledgement before the time expire। So it indicates that the data has now been received by the remote nodes। Yeah? So receiver now can identify that it has received a duplicate frame from the label of the frame and it is discarded। Clear? सीक्वेंस नंबर से टाइमर के अकॉर्डिंग डेटा आपका सेंड होगा। ठीक है, ये देखिए डेटा आपका सेकंड डेटा यहाँ लॉस हो गया था, देयर इज अ टाइम आउट। ठीक है, तो रिट्रांसमिशन आपका दोबारा डेटा रिट्रांसमिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर से टाइमर रीस्टार्ट हुआ, डेटा इज रिट्रांसमिटेड और इस ड्यूरेशन में टाइमर आपका स्टॉप्ड हो गया एंड एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द टाइमर गेट स्टॉप। ठीक है, लेकिन जो है जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब सेकंड डेटा सेंड हो रहा था तो यहाँ जाके ये लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट इसका नहीं रिसीव हुआ। तो जब ये टाइमर आपका जैसे एक्सपायर हुआ तो टाइमर रीस्टार्ट हो गया, फिर से वही डेटा सेंड हो गया। ठीक है, तो दिस इज टू अवॉइड द लॉस ऑफ पैकेट। ओके, सो एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? अभी तक किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर ये आपको कवर कर लेना है, एरर डिटेक्शन करेक्शन, प्रॉपर स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, एंड देन ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। ठीक है,
इज इट क्लियर? ये हमने Yes, आपको sir. पीडीएफ आपको शेयर की हुई है मैंने, आप लोगों ने देखा होगा. I've shared this PDF. Also, you all have got the papers. सभी को पेपर मिल गए होंगे. Yes, sir. Okay, so I am just now I am going to share you the SQ15. ठीक है, सभी को शेयर कर रहा हूँ मैं. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. I'm just going to share you on Google Classroom. So just wait. It is parallelly assigned to both the classes. Yeah. So the time is same for both of your class. Clear? Okay. So one of the class is assigned, I think. मिल गया होगा 7374. Sorry, 7172 को मिल गया. हेलो. सर अभी नहीं आया है. अभी नहीं आया है. Okay. It is assigned to both the classes. You may check this. Yes. दोनों क्लास को असाइन हो गया है, आप देख सकते हैं. सभी को असाइन हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you may continue. Clear? And so 10 minutes is allotted, so submit it within time. Yeah. So now I can end the session. I think you all have marked your attendance as well. सभी ने attendance mark कर दी है. Yes, sir. Okay. Thank you, class, and all the best for your exam. Thank you, sir. Thank you, sir.